Okay. That is something we have when we talk about drawing a hut. So ये कुछ ऐसी चीज है जो हमको निकालनी है. ये निकालना है आपको आपके स्क्रीन के ऊपर. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारी वैल्यूज दी गई है. ओके. So there are a lot of values being given about rectangles and so on. So this is something that you all will have to implement. अभी ये implement करेंगे कैसे? अभी ये implement करेंगे कैसे? So that is what matters. उसके लिए सिंपल सा एक ही चीज आपको करना है. कलर्स वगैरह फॉर नाउ भूल जाओ. ये फ्लड फिल आपको पता चल जाएगा क्या है. And all those things we'll understand later. But the first part is drawing the main architecture. Drawing the main architecture of this particular house. So आप यहाँ पे variations भी कर सकते हो आपके घर में. ऐसा कुछ ही है नहीं कि ऐसा ही घर आपको निकालना है. But let's understand. This is all about coordinates. आपने rectangles कैसे use करना है सब कुछ आपने देख लिया है. So now it's all about coordinates, playing with coordinates. So let's see how we can do this particular part. Okay. First we'll see it in your presentation में देख लेते हैं और बाद में हम आगे बढ़ते हैं. Okay. So going right here. Drawing a hut is a task. Okay. So now how are you supposed to do it? So हट ड्रॉ करना है. हट ड्रॉ करना है मतलब चलो पहले ड्रॉ करने की ट्राई कर लेते हैं. So this is one rectangle. Okay. So this is one rectangle. This is another rectangle. Okay. फिर ये कुछ ऐसी लाइन आएगी. ये दूसरी लाइन आएगी. ये तीसरी लाइन आएगी और एक चौथी लाइन आएगी. ओके. और बीच में यहाँ पर एक डोर के लिए दूसरा एक रेक्टेंगल आप ले सकते हो. This is the basic shape of your so-called hut. Okay, this is the basic shape of your so-called hut. और ये इतना होना तो जरूरी है. This has to be there. Okay, so this is something that is required and this has to be there. So now let's go and see how do we implement. Now this hut needs to be made. It needs to be made on our screen. So अभी सबसे पहले हम ये देखा कि हमने कैसे बनाया. So same approach रखने वाले हम. We are going to have three rectangles. We are going to require three rectangles, and those rectangles are 1, 2, and last one is 3, which is lowest on our priority. But ये बनाना है. Okay, so there's 3 rectangles, and then we require certain lines. This is 1, 2, 3, and 4. So 4 lines. So ये सारी चीजें हमको यहाँ पे बनानी है. First, let's begin with the help of creating a rectangle. Okay, so let's begin from creating certain rectangles. First, we'll draw the 1 and 2 rectangle. Then we'll see about the third rectangle, which is there. Okay, so let's draw the 1 and 2 rectangle, and then let's go to the third one. So let's go in after it. So सबसे पहले आपकी जो coordinate system है, that has to be right there in place.
So the coordinate system has to be right there in place. So ये आपकी coordinate system, x-axis and y-axis. This is just a game of coordinates and nothing else. So we begin over here from 0. Okay, so let's take it 50, somewhere around 600 तक जाता है. So 50, 100, then we have 150, we have 200, 250, 300, 350, okay, 600. So let's take this up till 600. यहाँ पर हम 500, 550, over here it somewhere goes up till looks like your so-called part of 400 या 450. So I'll just stop right there. So ऐसी कुछ हमारा ये पार्ट होने वाला है, दैट इज ये हमारी ऐसी कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखती है. सो अभी इसके बीच में हमको हट निकालना है. सबसे पहले हमको निकालना है रेक्टेंगल. लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल दैट वी हैव. ये रेक्टेंगल हमको निकालना है. ओके, this rectangle we have to draw. So to draw this particular rectangle we will come right here on our part. और यहाँ पर अगर हम देखते हैं, so let's take it to be 150 comma 300. So that will be our first point. Okay, 150 comma 300. So it will be 150 comma 300. So 150 comma 300 shall be our first point. And then we have to take the last point that is somewhere over here. So let's take it 250 comma 450. Okay, so 250 comma 450. So कुछ ऐसा rectangle हमारा बनना चाहिए. So this will be our first rectangle and these are the coordinates for the same. 150 comma 300 and 250 comma 450. Now talking about the next rectangle. Next rectangle हमारा इसके आगे ऐसा कुछ आने वाला है. This is our second rectangle. This is something that we have to draw. Okay. अभी यहाँ पर एक point है. Point ऐसा है कि ये जो point है ये इसके साथ joint होना चाहिए. ये पुराने वाले रेक्टेंगल के साथ ज्वाइंट होना चाहिए. अभी इसको ज्वाइंट करेंगे कैसे? इसको ज्वाइंट करेंगे कैसे मतलब क्या? ये पॉइंट हमको पता करना है. दिस पॉइंट वी हैव टू फाइंड आउट. हाउ डू वी फाइंड आउट दिस पॉइंट? लेट्स टेक, हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम से सीधा पता चलने वाला है. ओके, ये हमारा अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये बन जाता है हमारा 250. एक्स एक्सिस पे हमारा है, इट इज नथिंग बट योर एक्स एक्सिस पे 250. ओके, एंड हमारा y एक्सिस पे क्या होने वाला है? y एक्सिस पे अगर इस तरीके से अगर हम देखते हैं, so this is nothing but 300. So we got that first point that we required. So I just told you this is all the games of coordinates. आपको ये ड्रॉ करना पड़ता है at a point. अगर खुद से करना है तो ड्रॉ करना पड़ता है, नहीं तो स्टूडेंट्स कभी कभी बाय हार्ट करके भी आते हैं if they are not able to understand how this coordinates work. But this is very easy. Normally दो प्रोग्राम्स आते हैं सीजी में. सीजी के प्रोग्राम्स इतने भी एक्सटेंसिव नहीं है कि उसको घंटों लग जाते हैं इम्प्लीमेंट करने में. सो इट इज प्रेफरेबल दैट ये जो बेसिक प्रोग्राम्स हैं उनको बाय हार्ट करना छोड़ दो और यहाँ पर ऐसे कुछ कॉन्सेंट्रेट करो. इट्स ऑल अबाउट ड्रॉइंग स्किल्स, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग स्किल्स. सो दिस इज समथिंग दैट आई सजेस्ट स्टूडेंट्स दैट इस पार्ट के लिए जो इनिशियल प्रैक्टिकल्स है, नियरली अबाउट 2 to 3 प्रैक्टिकल्स, और उसमें बहुत सारे ऐसे मतलब
टू पार्ट्स है, तो वहां पर आप रादर देन बाय हार्डिंग एंड ऑल्सो फॉर ट्रांसलेशन स्केलिंग, अगर आपको फॉर्मूलाज सिर्फ आपको आते हैं तो आप इजीली उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो. सो आई नेवर सजेस्ट दैट स्टूडेंट शुड बाय हार्ड प्रोग्राम्स एंड टर्म्स, बिकॉज दैट बिकम्स टू एक्सटेंसिव, और ऐसे बेसिक प्रोग्राम्स को बाय हार्ड करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है. तो ये आप ऐसे कर सकते हो. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. अभी हमको दूसरा रेक्टेंगल, मतलब जैसे मैंने बोला ये पॉइंट चाहिए और अभी ये पॉइंट चाहिए, राइट. सो उसके बीच में रेक्टेंगल बनेगा. रेक्टेंगल का फंक्शन हमने लास्ट टाइम देखा था, हमने दो ही पॉइंट दिए थे. इफ यू रिमेम्बर, आई हैड जस्ट गिवन 2 पॉइंट्स. इफ यू ऑल डोंट, प्लीज रिवाइज द प्रीवियस लेक्चर्स विच आर देयर. सो रेक्टेंगल बनाना है और वो हमको कुछ ऐसे बनाएंगे. सो लेट्स यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये कुछ ऐसे बनना चाहिए. सो अभी हमको ये वाला पॉइंट चाहिए. ड्रॉ करने के बाद लेट्स ट्राई टू विजुअलाइज वेयर दिस पॉइंट इज. समवेयर अराउंड 400. 400 से थोड़ा आगे लिया है मैंने, बट 400 ले लेते हैं. सो 400 ऑन द एक्स एक्सिस. ओके. फ्रॉम अगेन 450 लिया है. 450 ये थोड़ा आगे जा रहा है, बट नो प्रॉब्लम. वी my drawing can't be proper on this particular screen, so please understand that. So 400 comma 450. So these are our two basic rectangles which we have formed. So now let's get back to our so-called turbo C, और देखते हैं अगर हम ये implement कर पाते हैं, और अगर हमारा जो जजमेंट है जो हमने किया है वो बराबर आता है क्या. बट उसके पहले मुझे जरा वैल्यूज नोट डाउन करने दो, सो दैट आई कैन ड्रॉ इट राइट देयर इन दिस अवे. नाउ yeah. Okay, now begin with going drawing the rectangles. So first rectangle that we have, let's draw it. तो सबसे पहले रेक्टेंगल के जो हमने पॉइंट्स डिसाइड किए थे वो कुछ ऐसे थे. Okay, so this is it. So just let me save this. Click on compile. Zero errors. So we'll run this. रेक्टेंगल आना चाहिए हमारा. रेक्टेंगल आ रहा है. थोड़ा सा नीचे रहा है क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट से कुछ नीचे के साइड पे लिए. वाई जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे लिए, बट नॉट एन इशू. इट इज स्टिल इन पिक्चर, सो वी शुडंट रियली केयर अबाउट इट. सो दैट इज इट. Okay, so that is it. And then okay, now a so-called second rectangle. इसमें आते हैं आपके शुरुआत और एंड पॉइंट जो हमने लिए थे वो कुछ ऐसे थे. 250 कॉमा 300 कॉमा 400 कॉमा 450. So this is it. Compile and run. So here it goes. This is how we have formed the basic structure. Now the part is of line part. Okay, so अभी हम करेंगे हमारा line का part. So we have been successful with one part. Now let's go to our another part, that is drawing the lines. That is nothing but your ये जो पार्ट है हमारा, यहाँ पे हमको जो 1 2 3 4 लाइंस दिए वो पहले निकालते. आई नो देयर इज अ डोर विच इज पेंडिंग, बट दैट इज डोर स्टिल नॉट द क्रूशियल पार्ट. वो हम बाद में भी कर
सो यहाँ पर हम ऐसा डोर निकाल सकते हैं। आप दूसरी भी चीजें निकाल सकते हो यहाँ पर, जैसे कि विंडोज निकाल सकते हो। बहुत सारी चीजें हो सकती है, सो दैट डजंट हैव लिमिटेशंस। यू कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ हट। फाइनल पार्ट हमने जो डिसाइड किया था वो था, ये था रेक्टेंगल, दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल, सो उसका ये पॉइंट है। Okay, or this is the point, this is the another point. So if we talk about this particular point, let's consider it to be somewhere around 200 comma 400. So 200 comma 400, and then this particular point, which is nothing but ये 250 नहीं हो सकता, ये somewhere let's take around 220 on the x-axis, comma your 450. So that is the part that is there. So this is uh, the rectangle, the door which will be drawing. So 200 comma 400 is the first point, and last point of that rectangle is 220 comma 450. So let's go after this and see if our particular rectangle is drawn. So going after it. So rectangle again. 200 comma 400 comma 220 comma 450. Click on compile and then run. सो हियर इज इट। अगर आप देखते हो तो थोड़ा सा राइट साइड पे आ गया है, तो आप जस्ट आपका जो पार्ट है, that is I guess this is both the coordinates which have been facing a problem. So yeah, तो वो दोनों coordinates जो है वो मैनेज करने जरूरी है। So let's take it towards the play with coordinates a bit if required. So here it goes. Now it should be looks a little bit kind of proper. So yeah, this is something that you all can do with this particular part, and this is how your hut should look. So इसको हमने coloring भी किया था output के अंदर. So आप वो manage कर सकते हो coloring part which is there. So let's see how this particular thing really works. So ये हमारा कुछ ऐसा output था, और यहाँ पे कलरिंग किया गया है। सो व्हाट इज द दोस व्हाट आर दोस पार्ट। सो उन्होंने बेसिकली हर जगह पे कुछ कलर सेट किए गए हैं। सबसे पहले व्हाइट कलर सेट किया है, which is nothing but the structure. If you see, the structure is in white, and normally we don't have to set it. After that, for certain parts, set fill style किया गया है। सेट फिल स्टाइल, सॉलिड फिल एंड ब्राउन। सॉलिड फिल इज दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये जो ब्राउन कलर है ये सॉलिड फिल में जाता है। ओके, सो एंड ब्राउन सेट फिल स्टाइल, बट वो आता है आपको फ्लड फिल वहां पे यूज करना है। वहां पे हमको कुछ समथिंग कॉल्ड एज फ्लड फिल जो है वो यूज करना जरूरी है। सो दैट इज द पार्ट दैट वी रिक्वायर फॉर फ्लड फिल। फ्लड फिल मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है। दिस इज अनदर पार्ट दैट वी हैव, ये हमारे सेट ऑफ इसमें भी है, दैट इज दिस पर्टिकुलर फंक्शंस, इनबिल्ट फंक्शंस में। और फ्लड फिल के ऊपर हमारे पास एक अलग सा पार्ट भी है, that is the part that we have uh, something like एक प्रैक्टिकल है हमारे ऊपर फ्लड फिल के ऊपर, स्कैन फिल एंड फ्लड फिल, बाउंड्री फिल एंड फ्लड फिल मेनली। सो दैट इज स्टिल अवेलेबल, सो वो हमको देखना है। सो आई एम कीपिंग दिस फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट। इनबिल्ट फंक्शन भी आता है एंड सो ऑन।
So that is something that we are supposed to have right here. So that we'll be having, and we'll be seeing how we are supposed to go about it. Okay. यहाँ पर अगर आप देखते हो या सीड पॉइंट दिया गया है, सीड पॉइंट इज जहां जब तक वो व्हाइट एनकाउंटर नहीं करेगा तब तक वो फिल करने वाला है. So that is something that we are going to have, and we'll keep this part for later part. I'll show it to you how we are supposed to do this part. ये rectangles के ऊपर dependent होता है, ये rectangles के ऊपर dependent होता है. Okay, chalo, let's I will show this part to you all. At least the rectangle part I will show it. The rest of the part that is there. So यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो flood fill fills a bounded region. Okay, flood fill fills a bounded region. अभी वो कहाँ तक फिल करने वाला है, कहाँ तक, उसको हम स्टार्टिंग एक्स एंड वाई पॉइंट देंगे, स्टार्टिंग एक्स एंड फाइव पॉइंट हम उसको देंगे, बट उसको एक बॉर्डर देनी है. Okay, that border is basically where it is supposed to stop, filling that particular rectangle, where filling that particular polygon. So it works on polygons, and it will start from a certain point and it will stop to a certain point where that border is mentioned. अभी border उन्होंने कैसे mention किए देखो, इस केस में area bounded by color border. Okay, there is a statement right here, area bounded by color border is flooded with the color fill pattern and fill color. So fill color वो तब तक color fill करेगा जब तक he doesn't encounter the border, he doesn't encounter the color border. So इसलिए हमने वो set color जो white है वो हमको सेट कलर करके करना पड़ता है बॉर्डर्स के लिए. सो वंस वी सेट दैट कलर टू बी व्हाइट फॉर ऑल आवर बॉर्डर्स, दैट इज फॉर आवर स्ट्रक्चर मेन. ओके, स्ट्रक्चर इज सपोज्ड टू बी इन व्हाइट, सो फॉर द स्ट्रक्चर वी सेट इट टू बी व्हाइट. देन वी गिव अ स्टार्टिंग पॉइंट, इट विल फिल इट till doesn't it, जब तक वो बॉर्डर एनकाउंटर नहीं करता तब तक. ओके, व्हाट इज दिस? सो आई विल टेल यू ऑल. So talking about flood fill, जरा बेसिक्स आपको इससे बता दूं. Okay, ये flood fill है आपका. The half diagram is missing, looks like. Okay, it's gone. No, it must be right here. Okay. अभी flood fill क्या कहता है? Flood fill जो कहता है that is एक फंक्शन है. Okay, this is responsible for filling colors. Okay, filling colors, but इसका syntax है, syntax ये है, flood fill x and y from a border. Okay, now this x and y are said to be something called as seed points. Okay, these are said to be something called as seed points, and border normally हम colors देते हैं. Okay, normally we give it the colors. तब जहां तक fill होना चाहिए वहां तक. अभी सीड पॉइंट्स जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं. सीड पॉइंट्स दो तरीके के हो सकते हैं. Okay, if seed is inside a polygon, or you can say inside a polygon like rectangle, or inside certain area. Okay, seed is inside area, या फिर seed can be outside polygon. Seed can be outside polygon. तो दो ये जो एक्स वाई पॉइंट जो हो सकता है इसको हम सीड कहते हैं, और ये जो सीड है वो इनसाइड द पॉलीगॉन हो सकता है, इनसाइड सर्टन एरिया हो सकता है, या आउटसाइड सर्टन एरिया हो सकता है. इफ द सीड इज मेंशन टू बी इनसाइड, अगर हमने सीड इनसाइड दिया है, इट विल फिल कलर, फ्लड फिल विल फिल कलर in enclosed area that is inside the polygon, in enclosed area that is in enclosed polygon mainly, मतलब inside the rectangle हमारी केस में. If it is outside the polygon, it will fill
color, fill color outside that particular, in the exterior part of the polygon, in the exterior part outside that particular polygon, in the exterior part of the polygon, in the exterior part of the area. Okay, so that is how your flood fill works. So इसके लिए हमको xy कोऑर्डिनेट देना जरूरी है, और xy कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा होना चाहिए जो एक तो पॉलीगॉन के अंदर होना चाहिए, एक तो पॉलीगॉन के बाहर होना चाहिए. ओके, बॉर्डर कलर इज बॉर्डर इज गोइंग टू बी सेट बाय सर्टेन कलर्स. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पार्ट है, दैट इज ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया, हम स्ट्रक्चर को एक कलर सेट करेंगे और वो होगा व्हाइट. ओके, ये होने वाला है व्हाइट. सो व्हाइट करके हम एक बॉर्डर, सो हम एक सेट कलर for our structure, we'll use a command called as set color, and we'll set color white for all our structure of the house. After that, we will fill up this particular part. We will try to fill up this particular part. ओके, ये पार्ट हम फिलअप करने वाले हैं. ये पार्ट हम फिलअप करने वाले हैं, कुछ ब्राउन या ऑरेंज कलर जो दिया है उससे हम ये पार्ट जो है वो फिलअप करेंगे. अभी इसके लिए हम फ्लड फिल यूज करेंगे. फ्लड फिल यूज करना ब्राउन कलर फिलअप करने के लिए. सो फ्लड फिल क्या कहता है, इट विल बी फ्लड फिल. फ्लड फिल में हमारा जो सिंटेक्स है वो कुछ ऐसा है, एक्स एंड वाई हमको देना है, दिस इज नथिंग बट योर सीड पॉइंट. सो सीड पॉइंट हैज टू बी, अगर हमको ये पर्टिकुलर पॉलीगॉन फिलअप करना है, दिस पर्टिकुलर पॉलीगॉन वी हैव टू फिलअप, इन दिस केस हमको सीड पॉइंट जो है इंटीरियर देना जरूरी. इंटीरियर मतलब क्या, इनसाइड द पॉलीगॉन. ओके, इनसाइड द पॉलीगॉन, वो पूरा एरिया enclosed, because we want to fill the color inside that particular polygon, inside that particular area. That's the reason हमारा seed point जो है वो भी inside that polygon होना चाहिए, वो भी inside that polygon होना चाहिए. ओके, सो सबसे पहले हमारा x and y पॉइंट जो है वो उसको हम विजुअलाइज करते हैं. इनसाइड द पॉलीगॉन बोला है तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे जो है उसको चल सकता है. ओके, ये पॉइंट को अगर हम विजुअलाइज करते हैं तो हमको कुछ मिलेगा ऐसे. लेट्स सी, इट इज, आई कैन से 152, okay, on the x-axis, and it can be somewhere around 320 on the y-axis. So seed point का जो मैंने coordinates लिया है is nothing but 152 somewhere inside the polygon. मैंने just एग्जाम्पल दिया एक पर्टिकुलर डॉट, आप कहीं पर भी वो डॉट ले सकते हो, आप नीचे भी ले सकते हो, बट वो इनसाइड द पॉलीगॉन होना चाहिए. सो मैंने जस्ट एक विजुअलाइजेशन किया है और उस पॉइंट को मैंने बोला है 152 एंड 320. ओके, वो पॉइंट अंदर का होना चाहिए. और बॉर्डर में हम क्या देंगे, बॉर्डर में हम देंगे, हमने जो ये सेट कलर व्हाइट लिया है ना, दैट विल कम इनसाइड आवर बॉर्डर. सो एक्स एंड वाई विल बी योर 152 320, and your border will be nothing but so called as white. इसके साथ हमारा जो पार्ट है वो फिलअप होने जाने वाला है फ्लड फिल से, और उसके लिए हमने और एक पार्ट जो यहाँ पर दिया है जरूरी है, दैट इज सेट फिल स्टाइल. सो सेट फिल स्टाइल का सिंटेक्स हम बाद में समझ लेते हैं. ये बेसिकली कलर है और स्टाइल क्या है वो. सो स्टाइल्स आप बहुत सारी देखोगे, स्लैश फिल है, हैच फिल है, वो कुछ सर्टन स्टाइल्स हैं जो अवेलेबल है. सो वो हम सारी तीनों की तीनों स्टाइल्स यहाँ पे मेंशन्ड है एक्चुअली. सो एक होगी स्टाइल और एक होगा कलर. Okay, so एक होने वाली है style and color. So solid fill, slash fill, and hatch fill. These are the colors. So let's try one. क्योंकि हमारे पास फिलहाल के लिए उतना ही टाइम है. So going after it, सबसे पहले हम करेंगे something called as set color white, जिससे हमारा स्ट्रक्चर जो ऑलरेडी व्हाइट दिखता है, बट यस व्हाइट दिखेगा. आप दूसरा कोई कलर वहां पे ट्राई कर सकते हो, नॉट एन इशू. सो दिस इज इट, सेट कलर व्हाइट. कैपिटल लेटर्स में कलर होना जरूरी है. बाद में हमको फ्लड फिल करना है. सो फ्लड फिल, एक्स एंड वाई, दैट इज द सीड पॉइंट जो हमने डिसाइड किया है 152 फ्रॉम 320.
कॉमा हमारा बॉर्डर का जो कलर है दैट इज सेट टू बी व्हाइट. ओके, सो दैट इज फ्लड फिल दैट इज रिक्वायर्ड. सेट फिल स्टाइल करना हम भूल चुके हैं. सो सेट फिल कैन स्टाइल. स्टाइल दैट इज नथिंग बट सब कुछ कैपिटल में था वहां पे. सॉलिड फिल जैसा ही था शायद. लेट मी सी. I shouldn't really forget. Solid fill and then the color. Oh, solid fill and then the color. So ले लो कोई भी कलर, देखते हैं क्या होता है. Okay, so this is it. So let's try to save this. Orange is not an identified symbol. Brown. Okay. Where else? So we just run this. Let's see if this works. Yeah, it does work. So that is how your particular color is filled with the help of flood fill. So seed point जो है वो या तो exterior हो सकता है या तो interior हो सकता है. Take note of that. आप पूरा बैकग्राउंड भी फिल कर सकते हो सीड पॉइंट से. जो एक्सटीरियर वाला क्राइटेरिया बोला है वो यूज करके. सो दैट इज द पार्ट जो